Nafia, we will do it like how to raise children in Western country. Yeah, you tell me too, okay? Because I still don't know. मेरा जो अपना I think you should say तजुर्बा है, so my own experiences raising your children in Western country to make them friends, and you're not supposed to be a typical parents like Pakistani typical parents or Indian typical parents or Bangladeshi के बच्चों को हर वक्त पिक करो और बच्चों को कहो ओ तुम गुड मुस्लिम नहीं हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने सही नमाज नहीं पढ़ी, तुमने लंबी नमाज नहीं पढ़ी, तुमने कपड़े ऐसे पहने, तुमने कपड़े वैसे। उनको तुम फ्रेंड बनाओ। सबसे पहले तो बच्चों को तुम फ्रेंड बनाओ छोटी एज से, और उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखो, ताकि वो बच्चे अगर बाहर किसी चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं तो ना हो, वो आपको बेस्ट फ्रेंड समझे। That's what I think, नाफिया। नाफिया जाहिर बात है मैं थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन की हूँ, नाफिया न्यू जनरेशन की है, तो नाफिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगी। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। जहाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता था वहाँ मैं स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने कभी अपने बच्चों को डिस नहीं किया कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एक दो दफ़ा मैंने नाफिया को या सुमैया को या मलीहा को कहा होगा कि वेट लूज़ करो, फिर मुझे खुद ही शर्मिंदगी हुई, मैं क्यों कह रही हूँ उनको वेट लूज़ करो, क्या मुझे मेरी बेटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं? लेकिन and honestly that really does affect, because I remember the first time that her mama said it, and I think she said it because I was suffering from... No, it was because a lot of people were calling us fat. No, it's not only that, and I suffer all my life from these abuse language and abuse comments, but moti, so honestly, I don't want my children suffer. None of it mattered. It doesn't matter who said it, but when your mom tells you you're fat, it does hurt. Because it does hurt. Your mom's supposed to, like, it doesn't matter what it is, she sees you beautiful in any way. मलीहा की एक फ्रेंड है, वो उसने लिटरली मलीहा को एक दफ़ा कहा था कि मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बताया कि मैं जब पैदा होगी तो मेरी माँ ने कहा था कि हाय ये क्या काली कलोटी पैदा हो गई, और अभी तक वो जवान हो गई, अभी तक वो अपने माँ के साथ सही नहीं है। सबसे पहले तो ये है। दूसरा जो मेरा एडवाइस है कि बच्चों को आप, ये आ गया इकबाल, और अभी इकबाल भी आपको बताएगा। इकबाल, जो दूसरी बात है वो ये है कि बच्चों को, हम मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको इस्लाम से टच रखें। इज़ इट इकबाल? बिकॉज अगर आप अपने बच्चों को अपना दीन सिखाएंगे, अपना मजहब सिखाएंगे, तो वो आपकी बात मानेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। ये 24 घंटे मेरा मजाक उड़ाते हैं। इधर आ, ये मेरा हाथ लंबा भी नहीं होता। इधर आ, तस्वीर उतारते, इधर आओ, मैं थंबनेल उतारती हूँ, इधर आओ, दो मुझे हाथ। चलो ये कहते हैं तुम दोनों गयानी बातें कर रहे हो, जरा नीचे हो जाओ, तो इतना लंबा है ये लड़का ना। ये रात के कपड़ों में है तो इसलिए अब ये मुंह नहीं दिखा रहा। ये बेचारा आते ही बच्चों के साथ होमवर्क करने पे लग जाता है, फिर उनकी क्लास लेता है, और सारा दिन इसकी ऑपरेशन ही होते हैं। आज भी अभी खफा हो रहा था कि मेरा एक पेशेंट है तो वो ठीक नहीं है, कहते हैं उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो पेशेंट के लिए भी खफा होता है। हॉस्पिटल के सारे गम इधर ले आते हैं। आ जाओ ना, बात करो ना, राशा लगो खबर होका ये कहते हैं तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। ये ज्ञानी क्या? very deep talk. And Nafia knows my brain doesn't work that deep. चलो सुन लिया। अब ये जा रहा है वहाँ पे, ये दूसरे कमरे में सिर्फ जियो न्यूज़ देखता है, जियो न्यूज़, CNN न्यूज़, just like इमरान खान। बस इमरान खान को देख देख के ये आदमी जीतता है। नाफिया, you not allowed to take, you still on diet? Today was a very bad day. Today was a very bad day. Alhamdulillah. स्पेशली ना मलीहा का एक्सीडेंट हुआ, चलो वो बाद में एक व्लॉग बता के तो आपको दिखाऊंगी कि मलीहा का कैसे एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला ने मौत से बचा दिया।
आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में सारा कुछ मलीहा के साथ बैठ के बताऊंगी। मलीहा आपको खुद सुनाएगी, लेकिन मलीहा की गाड़ी ओनली 4 months ओल्ड थी, 0 मीटर थी। और शुक्र है मलीहा केलब और केलब का फ्रेंड बच गए हैं, क्योंकि वो बस अल्लाह ने ऐसा एक्सक्यूज बना दिया कि वो बच गए। किस्सा सुनाऊंगी। तो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों को अपनी दीन से टच करो। मैं सिर्फ ये नहीं, But not in a way where, sorry Mama, not in a way where you teach them that they should be afraid of their deen. ये क्योंकि वो जब बड़े होंगे ना तो वो अपनी दीन से नफरत करेंगे। कुछ माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, ये ना करो, ये हराम 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 करके ना उनके इस्लाम से दिल भर जाता है। And never hit them. Never hit them. क्योंकि अगर आप It doesn't work. It doesn't work. मुझे पता है माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को अब्यूज करके नहीं हिट करेंगे, स्पेशली माँ। लेकिन कभी कभी माँ सिखाने के लिए हिट कर लेती है और वो उनके दिमाग में रह जाता है। She's tired and there's lots of things and she's stressed out. She lives with the in-laws, like lots of things. वो इनके दिमाग में रह जाते हैं और वो आपको ज़रूर ताने देंगे। बल्कि नाफिया की एक फ्रेंड है, उसकी मैं बताऊंगी कि उसने नाफिया को ये कहा कि मैं आई नेवर गोना फॉरगिव माय मम बिकॉज शी डिड दैट। हालांकि उसने कुछ और नहीं किया, बस गुस्सा किया है और ये किया है। तो ये एक वेस्टर्न कंट्री में ये एक फसाद बहुत है कि बच्चों के साथ आपने पोलाइट रहना है, लेकिन पोलाइट इतना नहीं कि वो आपके पोलाइट होने का मज़ा उड़ाए और निकल जाए। तो उनके ऊपर नज़र रखनी है शेर की, नवाला देना है सोने का। समझ गए हो ना? तो व्हाट यू थिंक नाफिया? माय मेन टू Honestly, I don't think I'm the best person to actually give advice right now because my kids are young. I think you are the perfect person to give advice. No, You've but had five. You've had five, and you all guys. 5 of us were very different to each other. Very different. And actually, all 5 of us were different, but then at the same time, us 3, so me, Sumaya, and Siddiq, our upbringing was very different to Mali and Siddiq. फिर मैं In बुढ़ी हो Malia's गई। and Siddiq's time, no, you got busy. You got busy in business. In our 3 time, she was a stay-at-home mum. In Malia's and Siddiq's Still time, working, yeah, but but from home. But in Siddiq's and but in Sami's and Malia's time, we would hardly see mum. Like literally, she would be just working. So, and also, we were quite shy and timid and not really interested in fashion or dressing and this. Malia and Because Sami, that was my depression period. yeah, Malia and Sami were quite different. They were outgoing, they loved fashion, they loved to look good, they loved all that stuff. So it was quite different. Quite different. And we weren't And even it was allowed to challenges work. as We well. weren't allowed to work. But Malia was allowed to work at the age of 17? 18. But no, we weren't. We were just like, we were focused on studying. Yeah. So yeah, there was a different thing. But I feel like my mum was a lot closer at the beginning, not now, to Malia and Sami. Because the upbringing was a little bit different. You were more of a friend. Yeah. No, my main problem was my severe depression, Yeah, my Mum was worries, my lifestyle. You weren't really present in your mind. You मैं weren't really हर present. वक्त innit? hospitalized होती थी, home and hospitalized. So yeah, I miss Nafia and Sumaya. But she definitely did her best because we went on every trip. We went picnicking. We had lots and lots of memories. Even though she was really ill, she was on Prozac, antipsychotic drugs, and I know how people are on antipsychotics. I used to take Risperdal. She was still a very present mother. Very present, very hands-on. I try my best. Yeah. So एक ये बात है कि इस्लाम से उनको अपनी दीन से क्लोज रख, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मुसलमानों ने मुझसे नहीं किया, ये मेरे काफ़ी इंडियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी किया है, एक सिख लड़की है उसने भी किया है। तो मेरा सब के लिए ये है कि अपने मज़हब से उनको क्लोज करो। आप जिस मज़हब को भी फॉलो करते हो, क्योंकि मानते तो हम सब अल्लाह को है ना, कि अल्लाह जब भी कहते हैं अल्लाह तो या भगवान या जो भी हम कहते हैं, अल्लाह को जिस नाम से भी पुकारते हैं, हम देखते तो ऊपर ही हैं। तो आप जिस मज़हब को भी फॉलो करते हो,
प्लीज़ अपने चिल्ड्रन को अपने मज़हब के बारे में बताओ कि आपके मज़हब में जो जैसे हमारे प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने क्या कहा है, हमारे माँ बाप की वैल्यू बताया करो उनको, लेकिन उनको इतनी नसीहत ना करो कि वो बोर हो जाएं, क्योंकि जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो वो उसका उल्टा करते हैं। ट्रस्ट मी, वो बच्चे उसका उल्टा करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है तो वो कहती थी कि मेरे बच्चे कभी भी नमाज में, उनको नमाज के लिए कहती थी, उनके बच्चों ने सॉरी मुझे बताया कि हमारी माँ हमें नमाज के लिए कहती थी तो हमें इतनी चिढ़ती कि हम जाके मुसल्ले पे ऐਵੇਂ ही बैठ जाते थे, हम पढ़ते नहीं थे। imagine that. इतनी बदकिस्मती, क्योंकि वो अपनी माँ बाप से इतने तंग थे। सो नंबर 1 friendly, number 2 close to deen. What's the best way? So I don't know how the rest of my siblings were, but I viewed Islam as magical. So I thought it was magic. So my parents, especially my mum, would tell me that if you want something, ask Allah for it. So when I was younger, I really wanted long hair. I wanted clear skin. It was all about beauty for me. And I would sit there and ask Allah, can you give me this? Can you give me this? Can you give me this? Because my mum would tell me, like I've grown up with, when I speak to other people, they fear Allah quite a lot. When I think about Allah, I feel like He's my best friend. Yeah. And that's because of my mum. My dad, on the other hand, he's about fear. He says, fear Allah. But which he changed now. No, even now, he says, but Allah is great. He sees Allah in a different light. He says that He's a king and He's mighty and you all just, you have to be scared of Him. Yeah. Which I believe that it's like how parenting is. Yeah. You have to have a fine balance. You say that they're your best friend, but at the same time, you have, in order to respect them, you need to fear them a little bit. Yeah. And I believe that that's how your relationships with Allah should be, and that's how your relationship with your parents should be as well. Yeah. Right? एक और चीज, कभी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करो कि वो रात को कहीं No. नो नाइट बिजनेस। No night business. No night business. दिन को उनके फ्रेंड आते हैं तुम्हारे घर, ये And I जाते हैं honestly फ्रेंड्स के think, घर। I think your ये जो kids, नाइट बिजनेस है ना, your kids शैतान should be, खुल जाते your हैं। kids night completely no, but I think your kids should be supervised. They Yeah. have to be supervised. चाहे वो अपने कजन्स के साथ भी हों, चाहे yeah. फ्रेंड्स के साथ भी हों, आप इनको Because तब तक remember- जब तक वो टीनेज के Yeah, ना it's not होते, about not trusting your kids. It's not trusting shaitan. And But- shaitan's everywhere. पर आप उनको वॉच करो हाइडली, और उनको ये ना बताओ कि तुम उन पे शक करते हो। Yeah. उनको ये बताओ कि ये हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए Yeah. कर रहे हैं। Yeah. फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उन पे आई रखो, और उनको कभी भी नाइट के लिए, इवन इन योर ब्रदर हाउस, Yeah, don't. योर मदर हाउस, Don't. डोंट लेट देम गो अंटिल। अब सिद्दीक है, उसके बच्चे मेरे घर में रहेंगे तो अकेले नहीं रहेंगे, सिद्दीक साथ रहेगा। Yeah. नाफिया है, इसके बच्चे आएंगे। इसी तरह मलीहा अगर मेरे साथ रहेंगे तो अकेले मेरे साथ मेरे बच्चे अपने बच्चे छोड़ देते हैं। Yeah. लेकिन अगर सब कज़न इकट्ठे हों, सो दे मेक श्योर दैट नाफिया, सुमैया, मलीहा और सिद्दीक मौजूद हों। And make sure there's boundaries. So if, Yeah. even at this age, if say the boys want to go toilet, Yeah. you make sure that the girls don't They follow have to them. be separate. It has to be a separation between the male and the female kids. स्पेशली आजकल जो स्कूलों में एजुकेशन दी जा रही है, उसके बाद तो और भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हमारी अगर हमारी अमाया हमेशा डरती है टॉयलेट में, तो वो कहेगी मामा आई वांट टू गो, समवन कैन गो विद मी। सो हम मेक श्योर करते हैं कि उनका पेरेंट जाए उनके साथ, चाहे वो सिद्दीक है, चाहे वो नाफिया है, सुमैया, कभी भी कज़न कह देते हैं, कैलब कह देगा, मलीहा अमाया कह देगी, या एला के मैं जाऊँ, हम कहते हैं नो। हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चा अकेला हो, और हम एक कमरे में बैठ के 11 के 11 12 बच्चे एक साथ, मैं पागल हो जाती हूँ, लेकिन एक कमरे में होते हैं। If one of the kids aren't here for 5 minutes, we're asking. Where is that? Where are they? And also, और ये मेरी आदत थी, never let them close the door मेरी in a room. When they're together in the room, Yeah. never let them हमारे close घर the में door. किसी डोर पे लॉक नहीं है। वजह ये है
कि मैं लॉक पे बिलीव ही नहीं करती हूँ, और मैं कहती हूँ जब तुम लोग कमरे में होगे तो दरवाजा खुला होगा, लेकिन मैं गुस्से में नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये तुम लोगों की सेफ्टी के लिए, ऐसे ना अल्लाह ना करे तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। गेम आपने गेम खेलना है उनके साथ। You know what? One thing I would change with so far, my upbringing has been, I wouldn't have introduced iPads. I wouldn't have introduced मैंने iPads. अपने सब नवासों को जब ये 5 साल के हो जाते हैं तो मैं इनको iPad देती हूँ, and now I regret it. It was the biggest mistake क्योंकि of our lives. जब से मैंने अपने नवासों को, पोता पोतियों को iPad गिफ्ट किया है, तो मैंने अमाया को, एला को, as far as I know, अमाया, केलब, एला, यूसुफ और हना और इब्राहिम को, इन 6 को मैंने दिया है, और ये 6 अब हर वक्त iPad पे होते हैं, और I think I did a big mistake. The thing is, look how much. पर मैं अभी रिपेंट कर रही हूँ, मैं इनको ठीक कर रही हूँ. Parental things, but then at the same time, the kids' videos, they aren't even right. यानी कार्टून में भी खराबियां हैं. There's just. और एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके बच्चों के पास iPad है, कंप्यूटर है, चाहे वो 12-13 साल की क्यों नहीं है, टीवी है, उनके कमरे में टीवी, कंप्यूटर और कुछ नहीं होना है। मेरे बच्चों का एक कंप्यूटर होता था, वो लिविंग रूम में मेरे सामने होता था, और मैं आते जाते उस पर नज़र रखती थी। तब फर्स्ट कंप्यूटर हमारा था विंडो 95 का, और वो विंडो 90, किसी के पास इतने कंप्यूटर तब नहीं थे, डेस्कटॉप हमारे घर था, और विंडो 95 चला हुआ था, और उस पर काफ़ी ये इंटरनेट की चार्टिंग भी शुरू हुई थी, ये सब भी। लेकिन मैं उसको वही कोने में रखती थी, और हर एक बारी बारी बैठता था उस पर, और मैं नज़र रखती थी कि ये कहीं कोई और इस पे कुछ ऐसी चीज़ ना देख ले। तो इन चीज़ों के लिए भी आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा, तब तो सिर्फ वो होते थे, डेस्कटॉप होते थे, कंप्यूटर होते थे, आजकल तो हरामकारियों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा है। सो आजकल की ज़िंदगी में वेस्टर्न कंट्री में बड़ा करना एक चैलेंज है। Yeah, and I think as well, I think what I would want to do with Amaya is that she doesn't get time to have to do those things. So I put in Quran classes, I've got her in extracurricular I was coming to that point yeah. कि बच्चों को इनके माइंड को So इतना busy. occupied करो। Yeah. मेरे बच्चे स्कूल आते थे, स्कूल से सीधा जाते थे किसी न किसी एक्टिविटी क्लास में, किसी न किसी एक्टिविटी क्लास से, यहाँ तक कि डांस की क्लास में मैंने बुक किए थे। It might be a little bit whatever, but I never liked a guy or whatever it is. The first ever guy that I liked was in Pakistan. Yeah. In Pakistan. ये चली गई थी पाकिस्तान। I didn't have any supervision. I didn't have anything. I was free हो गई I थी was ना? just like, but you know, it was Pakistan. So unfortunately, I mean, it's a clear-cut thing that when you are supervised, when you have parents, that at the back of your head you're thinking, oh, I've got some, you know. तो यही पॉइंट पे मैं आ रही थी, एक और जो मैं। I'm not saying the kids won't make mistakes. They still will. किड्स मिस्टेक करेंगे। Yeah. और एक ये भी है कि यहाँ पे मिस्टेक्स कम है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ मिस्टेक ज़्यादा हैं, तो वहाँ मिस्टेक करके वो छुपा लेते हैं। हमारी किड्स यहाँ पे वो छुपा नहीं सकते, वो विजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपने उस मिस्टेक पे उसको पनिशमेंट नहीं देनी, आपने उसको समझाना है, आपने उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में करना है। मुझे किसी का फोन आया था, and honestly, I think you as parents are protectors. You should put that parda on your kids. Yeah. You know, you don't have to disown them and do this and this for other people, because these are your children. People are gonna talk either way. So you have to protect them. Yeah. So ऐसे तो 1000 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊं कि ये करो, लेकिन अपने आप को भी कंफ्यूज ना करो, अपने बच्चों को भी कंफ्यूज ना करो, और इजी इन्वायरमेंट में और इजी वे पे अगर आप सिर्फ बच्चों को दीन से कनेक्ट रखो और बच्चों को फ्रेंड बनाओ और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करो, और बच्चों के साथ मैं इनके साथ हर जगह जाती थी। मैं इनके साथ स्विमिंग पूल पे जाती थी, मैं इनके साथ सिनेमा में बैठी होती थी, मैं यानी कि इनकी हर एक्टिविटी में इनके साथ बच्ची बन जाती थी। तो ये मेरे साथ कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुई। अभी भी ये कहीं जाते तो मुझे लेके जाए, मैं कहती हूँ मुझे बुड्ढी को छोड़ दो घर, नहीं ये नहीं पसंद करते, ये कहते हैं हम तुम्हारी कंपनी एंजॉय करते हैं। वजह क्या है
क्योंकि मैं वो टिपिकल She's fun. मदर्स की तरह नहीं करती She's हूँ. fun. मैं फन करती हूँ. यहाँ आपके सामने मैं बड़ी सोबर बैठी होती हूँ. मैं तो कभी नाचती हूँ, तो कभी गाती हूँ, तो कभी क्या करती हूँ. बिल्कुल मैं अपनी एज की एक्ट नहीं करती हूँ. Look, let me just tell you this much how she is, right? Like, she's my mum. She stays here 3 days. Firstly, my mum would never stay down anyone's house. No. My husband loves having my mum here, and if it was a partner, they'd be like, oh my god, you know? Yeah, like they'd be of like, course, yeah. here we go, my in-laws here. My husband He literally called me. tells me, when is your mum coming? Yeah. When is mama coming? Tell her to come. So if you are a mother and you're watching this, be like a friend. Friend. You know, Especially to your children's spouse as well. have That's a good time. very Have a good important. time. Very You don't important. have to be like this stern. एंड एक और बात headmistress. करूँ, यहाँ पे जो बिग मसले पड़ते हैं वो ऐसे पड़ते हैं कि जब आपका कभी कभी टीन एज कभी बच्चा होता है एंड ही लाइक a girl or Yeah. a boy out of culture, out of religion, Yeah. please don't go harsh with them. क्योंकि मोहब्बत हो जाती है ना, बस हो जाती है. तो आप उसके साथ हैश ना बनाओ. कोशिश करें कि आप उसकी बात मान लें. अगर आपका बच्चा मुसलमान है और वो किसी मुसलमान के साथ शादी करना चाहते हैं, वो आउट ऑफ कास्ट है और आउट, तो प्लीज़ इसको इतना इशू ना बनाए, इसको इतना मसला ना बनाए. बेशक वो गोरी है और वो किसी और मज़हब की है, लेकिन वो मुसलमान होना चाहती है क्योंकि हमारे मज़हब में है कि मुसलमान होना चाहिए. तो प्लीज़ उसको कबूल करें और उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करें. तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे दूर हो रहे हैं माँ बाप से. वो इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि माँ बाप उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते. दूसरे हर वक्त पैसों का रोना 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 ना करे बच्चों के सामने, क्योंकि वही बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं जिन बच्चों को माँ बाप हर वक्त कहते हैं वी आर ब्रोक और यू, तुम लोगों के खर्चे इतने हैं, बिल इतने आते हैं बिल. लेकिन माँ बाप आखिर होते किस लिए? इसीलिए होते हैं ना कि इन बच्चों को बड़ा करे, इनको कंफर्टेबल लाइफ दे. अब उनको हर वक्त ताने 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 दे कि क्या मारना है. तो मैं भी अक्सर कह देती हूँ ये सारी लाइटें मेरे घर में जलती हैं, तो मैं कहती हूँ क्यों, तुम्हारे बाप की शादी है. लेकिन वो मजाक की बात होती है, मजाक पे ये ले लेते हैं, जल्दी जाते हैं, दौड़ 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 दौड़. लेकिन मैं इनको ताने नहीं देती हूँ कि ये हो जाएगा. ये कभी कभी कह देंगे ओ ये तुम्हारा बिल बहुत हाई आता है, तो मैं कहती हूँ क्यों, इसीलिए लोग कमाते हैं कि बिल दे, खाना खाएं, और क्या बैंकों में रख के क्या करना है हमने, इसी दुनिया में रह जाना है. तो अपने बच्चों को तंग ना करें और कुछ ना किया. Friends is major because even in Islam, the reflection of your friends will be on you. Yeah. You know, whoever your friends are or whoever your kids' friends are will automatically influence them. I am not telling you the completely judge a book by its cover, but if you think that somebody is not really good morally, right? Like maybe they're doing things, maybe lying, maybe getting your kid in trouble, or getting them into drugs, getting them into smoking, you need to try and get your child, but not in a harsh way. Yeah. In a way where, you have a conversation with your... You have to do communication first. And at the end of the day, you give them a choice. Yeah. How Allah gives us a choice. Yeah. So that later on, they don't say, let me tell you one thing. A child will always blame their parents. Yeah. That's true. No matter what happens, even if it's their own fault, they'll say, why didn't you tell me? Why you didn't tell me? That's true now. Okay. Yeah, that's true. So being a parent, no wonder Jannah is in the mother's feet and the gates of a Jannah is in your father's feet, because us kids are diabolical. It's very difficult. And very difficult. when a parent has a good child, it is truly a blessing from Allah. Okay. But there are good kids out there. I'm not saying they're not. It's a relationship where both of you, to get respect, you need to give respect. Yes, that's all it is. लेकिन पहले आप, मेरी अम्मी कहते थे कि पहले जो बड़ा होता है, जो माँ बाप होते हैं, पहले वो बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे. मेरी अम्मी कहती थी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यंगस्टर तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल में रखो और उनकी रिस्पेक्ट करो. फर्स्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन एंड गिव देम स्पेस. एंड
love them and care about them, and then they will come to you and respect you and care about you. Make them feel like your relationship is that kind of relationship that if you didn't exist, they'll miss you. Yeah. You know, they'll miss your absence. You know, make them in love with you. Yeah, first. that they love you. पहले उनको आशिक बनाओ अपना, Yeah. और फिर उनको वो जूते खिलाओ जो तुम्हारी मर्जी हो. So this is the conclusion. अपने बच्चों को वेस्टर्न कंट्री में पहले अपना आशिक बनाओ, जो मैंने किया है. Yeah, literally. मैंने लिटरली अपने 5 बच्चों को अल्लाह के मदद से, अल्लाह की मदद से, सुभान अल्लाह, उसकी मदद से मैंने अपने 5 बच्चों को और 5 बच्चों के स्पाउस को अपना आशिक बनाया. मैंने अपने नवासों को, पोता पोतियों को भी अपना आशिक बनाया. मैंने लिया है, मैंने उनको अपना आशिक बनाया है. अब वो सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है. बेशक ये And लोग one मुझे thing- 1 पाउंड भी ना दे, one लेकिन thing- रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत है. One thing, my mum has never asked us for anything. अल्हम्दुलिल्लाह. And I will And I never. think we respect I will never. the fact that she has never asked us for anything. मेरे And बच्चे that's- मुझे yeah. इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं कभी बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालती हूँ. सिद्दीक, समी, नाफिया, मलिया, सुमैया, इकबाल, साद, सब मुझे कहते हैं कि नहीं तो तुम यहाँ पे होती नहीं हो, तो ये जो इतने बड़े घर के डायरेक्ट डेबिट जाते हैं ये हम देंगे. मैंने कहा नहीं, मैं कहा मुझे अपना आप बहुत चीप लगेगा कि मैं बच्चों से पैसे लूँगी. तुम लोगों की फैमिली है, तुम लोगों का ये है, तुम लोग, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बिल्ड होता रहता है. अब इनके दिलों में मेरी इतनी रिस्पेक्ट है, मैं कहीं बाहर जाऊँ कुछ लेना हो तो मैं बच्चों के आगे जाके पैसे देती हूँ. मेरे इकबाल साथ मेरे साथ लड़ाई करेगा, लेकिन मैं पहले जाके पैसे दे दूंगी. कॉफी खरीदनी हो And कुछ, you know, उससे इनके दिलों में मेरी रिस्पेक्ट. मैं पीछे पीछे माँ बाप की तरह नहीं रहती हूँ. and it may be not a big deal, like it's all materialistic things, but when it comes to gifts, my mum showers us with gifts. इट्स नो मटेरियलिस्टिक. ये हमारे रसूलुल्लाह Islam सल्लल्लाहु as अलैहि well, वसल्लम ने कहा है कि आप इसमें तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तोहफा दे के एक्सपेक्टेशन न रखो कि ये Yeah. मुझे देगा. Yes. और मैं, दिस इज माई वे ऑफ शो लव. तो मैं अगर कहीं जाऊंगी तो मुझे नाफिया सुमैया बहुत डांटती है कि हर जगह जाती हो तो चीजें खरीदती हो, तो ये करती हो वो करती हो, अपने लिए लिया करो. मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम लोगों को दूँ, चाहे तुम लोग पहनो चाहे तुम लोग ना पहनो. Can मुझे I अच्छा लगता do है. another point? Yeah, go on. Comparison. Yeah, Please. that's Whether your sister's thingy is a doctor and yours is a मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ तुम or, द बेस्ट you हो. know, or your graphic or whatever it is, and don't ever compare your kids with other people's kids or put other अल्हम्दुलिल्लाह, people's kids down. अल्हम्दुलिल्लाह. ये कभी कह देते हैं कि हाँ वो ऐसे, मैं कहती हूँ नो. तो मैं हमेशा इनको कहती हूँ नो, तुम सब द बेस्ट हो, तुम जैसा कोई है ही नहीं. ये हमेशा नाफिया, लेकिन नाफिया कभी कह देती थी मैं ये हूँ, मेरा वो हो गया है, मैं ऐसी हूँ. मैं कहती थी नहीं, तुम जैसे तो कोई है नहीं. मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को नहीं कहा कि वो फलाने का बच्चा तो ये है तो तुम Honestly, ये it हो. hurts so It much. hurts so much. It hurts so much because alhamdulillah my parents haven't done it, but I've seen kids who still at the age of 30, 40, Yeah. they feel like they're not good enough because their parents have told them you're this and look at Falana's Yeah, whatever, Falana is this. they're this. मेरी एक दोस्त थी, वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को कह रही थी कि देखो सबिया के बच्चे ऐसे करे, मैंने उसे And मना कर दिया. also, let me tell you the prime example within our family, because my mum has treated us all the same. I'm a doctor, Malia's a, Barrister, you know, mashallah. she's being a solicitor. Somaya has done forensic science, but she's a homemaker now. Sami's a graphic designer. So, you know, we've all got different career paths, but we've never, like, my siblings have never been jealous of me being a doctor. They all feel proud Never, of her. like, and I have never thought that they're any less of me They're because so proud they're of not her. a doctor, because I think they're more clever than I am in certain things. And especially Siddiq, so proud of Nafia to be a doctor, and now Maliha want to become a And barrister. another thing, So he's another always thing. so proud. There's a lot of things to Yeah. make sure you make your kids best friends. Yeah.
ये कभी ये मत कहो एक बेटे की बच्चे की चुगली दूसरे बेटे को। मैं ये करती हूँ, अगर मेरे एक बच्चे ने, इनमें भी लड़ाइयाँ होती है, ये नहीं कि नहीं होती, ये कोई एंजल्स नहीं है। कभी सिद्दीक, अभी पिछले दिनों सिद्दीक और मलीहा की थोड़ी सी अनबन हो गई, तो मैं मलीहा को कह रही थी कि सिद्दीक तुमसे इतना प्यार करता है, और सिद्दीक को कह रही थी मलीहा तुमसे इतना प्यार करती है। मैं कभी एक बच्चे की नेगेटिव बात दूसरे बच्चे को नहीं बताती हूँ, मुझे क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी बच्चों की नेगेटिव बात एक दूसरे को ना बताओ, इससे इनके दिलों में नफरत आती है। तो अगर मेरे बच्चे आते हैं, नाफिया बहुत कम करती है, लेकिन मलीहा, हमारे घर में बच्ची ज्यादा है, या समी भी बहुत कम करता है, तो अगर मलीहा या सिद्दीक या सुमैया कह देगी कि ये इसने ये किया, तो मैं सबको लेक्चर देती हूँ कि वो, और मुझे पता है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात मुझे बताई भी हो तो मैं वो छुपा लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, वो तो ऐसे कर रहा था, वो तो वैसे, तुम्हें ऐसा भाई नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसी बहन नहीं मिलेगी, बात खत्म हो जाती है। सो कभी भी एक बच्चे की नेगेटिव बात दूसरी बच्चे को ना पहचान। In the West, I think the main thing is keep that family unit going. Yeah. You know, call each other, text each other, make sure that you're connected. Make sure you're united. नाफिया हमेशा मेरे लिए बहुत खड़ी होती है, यानी नाफिया की अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल किसी के साथ खफगान या कुछ नहीं होता। जितने भी अगर हमारी फैमिली में कभी छोटी मोटी बात हो जाती है वो मेरी वजह से हो जाती है, कि नाफिया जब देखती है मुझे कि ये मेरी माँ के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो ये खड़ी हो जाती। तो मैं उस दिन इसको ये भी मना कर रही थी, मैंने कि मैं खुद मुख्तार औरत हूँ, मेरे लिए ना खड़ा हुआ करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने कहा तुम चाहे वो मेरे साथ बोले, मेरी फैमिली मेम्बर चाहे जो भी हो, तुमने अपने रिलेशन इनके साथ खराब नहीं करना। तो अपने बच्चों को जितनी पॉजिटिविटी है वो उनमें डालो। अगर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़े होंगे तो ट्रस्ट मी कि दुनिया की कोई आफत उनको तब्दील नहीं करेगा। And make sure that if you are from Pakistan, well, obviously if you're born in the West is different, but if you are Pakistani, make sure that they're proud of their roots. Yeah. So that they don't wanna, they don't grow up being embarrassed of their हम roots, पाकिस्तानी हैं, हम ये हैं, हम पठान हैं। मेरे बच्चे, you should be proud and say I'm Bengali, I'm Pakistani, I'm Afghanistani, you know, हम पठान हैं, हम पाकिस्तानी, I'm Indian, whatever it is. You know, I love UK, but I always love Afghanistan and love Pakistan. Please teach them the language. Please teach them the language, because you know what, you acting like your kids not being able to speak another language, it's not a good thing, it's a bad thing. Having a multilingual child is a good thing. क्योंकि मलीहा और समी को पुश्तो जरा कम आती है, पूरी आती है लेकिन थोड़ा एक्सेंट खराब है। तो मेरे कजन ने परसों, क्योंकि इसके घर मेरे ससुराल वाले गए थे, तो मुझे कहते हैं तुमने क्या करना है इस जायदाद को, ये वो। नाफिया उस दिन कि मैंने तो सुना है तुम्हारे बच्चों को पुश्तो भी नहीं आती। तो मैंने कहा क्या हो गया, पुश्तो नहीं आती, उनको और 100 ज़बानें आती है, पुश्तो नहीं आती। तो मैंने कहा पुश्तो आती है। तो फिर मैंने अपने आप को गिल्टी फील किया कि मैं कामों में इतनी बिजी थी कि इनके साथ बस आराम से मैं इंग्लिश बोल लिया करती थी। तो alhamdulillah, they understand it. They understand it. वो बोल भी सकते हैं, बस एक्सेंट है थोड़ा सा। तो इस बात को भी लोग उछालते हैं कि सबिया के बच्चों को तो पुश्तो भी नहीं आती। But honestly, this is not why I'm saying it. I'm saying it because this is your roots. You should be proud of who you are. You should be proud that you know another language. मैं अपने नवासों के साथ और अपने इवन दीना के बच्चे, आपको पता है कि दीना यानी कि प्रॉपर इंग्लिश और अरबिक बोलती है। मैं हना के साथ भी पुश्तो में बात करती हूँ। She understands it. She understands it. She understands it. Children are so clever. They're sponges. They pick all these things up. समी के बच्चे वो आधी पुश्तो सारी समझते हैं, और आई एम सो प्राउड के बच्चे मेरे नवासे पोता पोती। बल्कि केलब के साथ मलीहा ज्यादा पुश्तो में बात करती है। Caleb, he might not look it, but he's the most Asian. Like he पराठा खाता है, he has चीनी खाता है, give me चाय पीता है, give me chai paratha. He has all the spicy सालन खाता है। all of our lot, they like bland food. हालांकि उसका बाप आपको पता है हाफ कास्ट है, और दादी भी उसकी गोरी है, बहुत अच्छी औरत है, लेकिन मेरा केलब जितना एशियन और पठान है उतना कोई भी नहीं है। तो चले ये व्लॉग अब यहाँ
एंड करते हैं क्योंकि स्टारबक्स से कॉफ़ी ऑर्डर की है, कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी के साथ साथ हम इसका दूसरा पार्ट भी शायद पोस्ट करें अगर नाफिया की तबीयत ठीक हुई। वो पार्ट होगा कि हाउ टू रेज चिल्ड्रन इन जॉइंट फैमिली। आजकल मैं वर्ड्स भूल रही हूँ, मैं बुढ़ी हो रही हूँ। इससे पहले कि मैं पूरी बुढ़ी हो जाऊँ तो मेरा ये ना YouTube व्लॉग मैं पोस्ट कर दूँ, फिर बाद में तुम लोग देखना। अभी इकबाल आया तो इकबाल कहते हो मेरा पेशेंट 70 साल का है, मेरा पेशेंट बहुत यंग है, बहुत बीमार है। मैंने कहा कितने साल का? मैंने कहा हो सकते 30-40 साल का हो। कहते 70 का है। मैंने कहा है 70 का यंग है? कहती यही होता है ना, जब 80 वालों को कहते हो कि 70 कहते हो, कहते हो बेचारा यंग है। तो कहते तुम 50 वालों को कहता हूँ कि 70 का, तुम कहते हो बुढ़ा है। तो मुझे तो अब अपना आप बुढ़ा लगता है। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोगों की मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। You know Mama's outro. Have you seen Asian mums when they say Yes. salam in the sofa? Then And it has then to be they- salam and in the they- and kitchen. Then it has to be salam on the door, and then it has to be salam in the car. But salam हुआ है क्या नामा? बस अब मैं जा रही हूँ, कॉफी आने वाली भी है, टुंग टुंग हो जाएगी। तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।